Cannizaro reaction will be shown by aldehydes which do not have alpha hydrogen. So example is formaldehyde, that is HCHO, and another example is benzaldehyde. Now here you can see that the functional group, that is aldehyde, the carbon which is attached to it will be known as alpha carbon. That is, functional group carrying carbon is known as alpha carbon. Now here we can see that this carbon's valency is here satisfied by aldehyde, here by carbon, and here by carbon, and the fourth valency is satisfied by pi bond. That is, the carbon's four valencies are not even a single hydrogen is present here, and hence benzaldehyde can also show cannizaro reaction. The second very most important thing for a cannizaro reaction to take place is alcoholic concentrated KOH. That is, cannizaro reaction takes place in highly alcoholic KOH, that is highly concentrated, very basic medium, and of course we need to heat this apparatus together because no reaction will take place at room temperature. We need to give energy to the molecules so that they can react. Now let's see the reaction mechanism. So till now we have understood that cannizaro reaction is a redox reaction. Aldehydes undergo redox. So we can even think of products that this reaction will give. Now basically aldehydes, if are undergoing oxidation, they will give acid. If undergoing reduction, they will give alcohol. Here they are giving both, so the aldehyde will give acid well as alcohol. Now let's take the example of formaldehyde. So HC double bond OH, which is known as formaldehyde. Here you can see that because of this pi bond, due to induction effect and highly electronegative oxygen tries to pull the electrons of this pi bond towards it. Hence we have written there is a partial negative charge, that is delta minus, on oxygen and partial positive charge on carbon due to induction effect. Induction effect is when a highly electronegative atom tries to shift the electrons towards it, pi electrons towards it. Now, this formaldehyde molecule is reacting with a strong base, that is, we used KOH, so this base. Now, this is OH minus. Now, we all know that opposite species attract each other. So, now OH minus, it will get attracted towards electrophilic. Electrophilic means electron lacking or a substance which has positive charge on it. So, OH minus will attack on the partial delta charge carbon. This is a very fast step because OH minus will directly attack on this. Now when OH minus will attack here, we can see that it will get conducted to HCH. This OH molecule will get attached to this carbon OH, and this pi electrons of C double bond O will get shifted to oxygen, which was delta minus, will now get completed into whole minus, क्योंकि उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे उसने अपने तरफ खींच लिए, इसलिए अभी सिर्फ पार्शियल चार्ज नहीं, पूरा ही नेगेटिव हो गया. और ये जो इंटरमीडिएट है वो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ पे ऊपर से नेगेटिव चार्ज विल बिकम हाईली अनस्टेबल. केमिस्ट्री में वी ऑल नीड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी कम हो. Now this intermediate molecule will react with another intermediate with another aldehyde molecule. Now let's see this. So what was the first step? Attack of nucleophile towards aldehyde. Now let's see second step. So second step is hydride shift. Now first just understand this. What is hydride shift? ये अपना इंटरमीडिएट था O माइनस वाला जो कि हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है. Now what will this compound try? This will try to stable itself. और वो कैसे करेगा? स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्यों नहीं है इस कंपाउंड में? इस नेगेटिव चार्ज के वजह से. तो वो कंपाउंड क्या ट्राई करेगा? उसका नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं एक तो चला जाए, यानी न्यूट्रलाइज हो जाए कोई पॉजिटिव चार्ज के वजह से, या फिर कहीं बॉन्ड बना दे. तो अभी तो उसे कुछ मिल रहा नहीं है पॉजिटिव जिससे वो कि न्यूट्रलाइज हो गए, तो वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाना फिर से शुरू करेगा. So now this O minus will try to make a bond
with this electrophilic carbon, that is a pi bond. And since ये pi bond बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, बट अकेला नहीं निकलेगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा. And when hydrogen moves with electrons, that is H minus, it is known as hydride. अगर H plus होता तो हम उसे प्रोटॉन बोलते. So this is known as hydride shift. ये अपना अनदर अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच. अगेन दिस इज पॉजिटिव डेल्टा चार्ज. और फिर ये हाइड्राइड विल अगेन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस डेल्टा कार्बन. और फिर से अगर ये इसको अटैच हो जाता है तो ये अगेन ओ बन जाएगा ओ माइनस. तो अपने को मिलेगा एच सी, ये इस कार्बन का पहले से जो ओ एच है वो. नाउ दिस ऑक्सीजन हैज मेड पाई बॉन्ड, सो इट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस अगेन HCH. This hydride got attached to this electrophilic carbon H and this O minus. Now again, you know, oxygen on this is very unstable, plus CH3O minus is a very strong base. Now here you can see that conjugate acid base theory, जिसका एसिड वीक होगा उसका बेस स्ट्रांग होगा. तो CH3OH अल्कोहल है एंड इट इज़ अ वेरी वीक एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट, इसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, उसका हाइड्रोजन निकालने के बाद, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर वी नीड टू लर्न इज दैट हाइड्राइड शिफ्ट इज अ वेरी स्लो स्टेप, हैंस नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब एकदम अच्छे से सुनो, अगर कोई रिले रेस चल रही है दो लोगों की, उसमें 3 प्लेयर्स है दोनों टीम के साइड से. उसमें जो फर्स्ट 2 प्लेयर्स है दोनों साइड के, वो 5-5 मिनट लगा रहे हैं, इधर भी 5-5 मिनट लगा रहे हैं. तो जो कौन रिले रेस जीतेगा किस पे डिपेंड करेगा, जो लास्ट प्लेयर है. अब यहाँ पे वो लास्ट प्लेयर बहुत स्लो है, वो 10 मिनट लगा रहा है. यहाँ का जो लास्ट प्लेयर है वो 1 घंटा लगा रहा है. तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा, जो 10 मिनट लगा रहा था वो. यानी कि वी कैन थिंक ऑफ दिस लाइक दैट द रिएक्शन डिपेंड्स on that step which is very slow, because all other steps will take place in fraction of seconds. The step which is very slow is the rate determining step, and here this second step, which is the hydride shift, is slow step, hence is the rate determining step. Or we can say that the reaction depends on these steps, or the, to be more specific, the reaction will depend on the concentration of these steps. इधर तक समझ गया. एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस CH3O माइनस विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. द लास्ट थिंग इज प्रोटॉन ट्रांसफर. नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल. सो दिस CH3 माइनस अब वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए अब उसके पास पॉजिटिव है, वो सिर्फ हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. सो नाउ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज फॉर्मिक एसिड, प्लस CH3O माइनस will give HCOO minus, formate ion, negative ion, plus CH3OH which is methyl alcohol. और अभी हमने देखा था कि रिएक्शन के कंपाउंड में HCOO माइनस KOH यूज किया था तो K प्लस है, तो अभी इसका नेगेटिव चार्ज कौन सेटिस्फाई करेगा, K प्लस, दैट इज पोटेशियम मिथेनोएट. सो वी कैन राइट दिस एज फॉर्माल्डिहाइड in the presence of alcoholic KOH gives पोटेशियम मिथेनोएट प्लस मिथिल अल्कोहल. और फिर बेसिकली अगर हमें एसिड फिर से चाहिए है तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करो. सो नाउ टू रिवाइज, वी कैन सी दैट cannizaro reaction is a disproportionate reaction, a redox reaction only shown by those aldehydes which do not have alpha hydrogen, example formaldehyde and benzaldehyde. Reaction takes place only in concentrated KOH, not on room temperature. We need to heat it. 3 steps of reaction mechanism is attack of nucleophile, that is OH minus, highly intermediate unstable, then hydride shift, which is a very slow step, hence the rate determining step, and the third is proton transfer. So end conclusion, we can say that formaldehyde in the presence of alcoholic KOH on heating gives potassium formate plus methyl alcohol. Hope you have understood this. Thank you.